आपने देखा होगा पिछले, जहां तक मुझे याद है, 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के, सीजफायर वायलेशन के पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें बीएसएफ को निशाना बनाया गया है। क्या इस इशू को इंडिया ने फॉर्मली पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली रेज किया है या नहीं? Okay. So hand there, yes please. विनीत दीक्षित फ्रॉम न्यूज़गेट। सर, कतर में जो 8 हमारे बंधक हैं जिनके खिलाफ डेथ पेनल्टी अनाउंस करी गई है, क्या उम्मीद करी जा सकती है कि कतर का जो नेशनल डे 18 दिसंबर के आसपास होगा, उस दिन तक वो सब रिहा हो जाएंगे? इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है और कहां तक सक्सेसफुल हुई है, कोई आशा की उम्मीद है? I saw another. Okay, go ahead, John. Microphone, please. Could you repeat the first part? The two governments are in contact, you said. Yes. About expanded number of? Expanded number of Indian workers. Okay. Can you confirm this? Okay. Okay, fair enough. Yeah, please. Microphone. Sir, Ayushi Gawal from MEA. Sir, will there be a representation from India in the upcoming oath-taking ceremony of the President-elect of Maldives on 17th November? Since there were reports of Maldives inviting our Prime Minister to visit Mali. Okay. Do you want more question? No, sorry, I saw your hand first. Yes, ma'am. Go ahead. Samir Hussain with BBC. Anthony Blinken is going to be coming to visit off the heels of a visit from the Middle East. How much will the Middle East be a part of the talking points at the 2+2? And do you expect to talk about Canada at all? Okay. Let me take this round of questions. And anybody has a follow-up on this instead of coming back to it? Yeah, go ahead. Microphone. सर, मैं विशाल हूँ जी न्यूज से। कतर की तरफ से क्या जजमेंट की कॉपी भारत को मुहैया कराई गई है जो हमारे भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है, और क्या कोई अपील मंजूर हुई है अभी तक? Okay. Any other ones on this? On Qatar, anything else? I know that's a topic you've been asking me. Okay, if not, let me start with President-elect. I think that was Ayushi, your question. We have received an invitation for Prime Minister to attend that. I'll let you know once we have a decision on who would represent us and what capacity. As of right now, I don't have any further information to share on that. But yes, we have received an invitation. Samira, on the issue of discussions, yes, as you know, the 2+2 is tomorrow. I think Secretary of Defense, U.S. Secretary of Defense has just landed, and we're expecting Secretary Blinken a little later in the evening. Tomorrow is there. I'm not going to try to prejudge the conversations. I guess, considering the nature of our relationship and the strategic, global strategic partnership, a variety of issues are discussed, including topical issues, regional developments. So I wouldn't rule it out, but I certainly wouldn't like to prejudge it. On Canada, if they wish to discuss, we are happy to discuss all issues. But again, I wouldn't have a position yet. Let's wait for tomorrow. We will try to update you what actually transpires. John, you had a query on Israel and India. Look, I'm not sure if specific conversations or requests. I saw some reports of 100,000 workers replacing other workers there. I haven't heard any of those things. I'm not aware of any specific figure or request. But since you asked on the larger topic, as you are aware, we have been working with towards giving our citizens access to the global workplace. You heard External Affairs Minister talk about this issue. In this regard, we have been in discussion on trying to get into mobility agreements with a number of countries. Such frameworks or agreements ensure that our people are treated fairly, their rights are protected, and they are not discriminated against. In fact, if you remember just now, External Affairs Minister was in Italy, and an understanding was concluded then. With Israel, there are already a number of Indian workers employed there, especially in the caregiver sector. Since, I think, 2022, we have been discussing a bilateral framework in the construction and caregiver sectors. But this is a long-term initiative, and I'm not, as I said, aware of any specific
requests or numbers that have been floating around. So that's what I would like to mention here. शैलेंद्र, आपका प्रश्न था इस जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बारे में, आपने इसी में पूछा था कि आज में इनफैक्ट आज कुछ इंसिडेंट आज का भी है. देखिए, हमने ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं हम रेगुलरली इनको ऐसे सीज फायर वायलेशंस जो होती हैं और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं होती हैं कभी ड्रोन से या फायरिंग से, ये हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इसका उल्लंघन है और हम इनको पाकिस्तान के साथ हम इसको हमेशा उठाते हैं और इसको हम टेकअप करते हैं. और ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुई हैं, आज वाले का बात कह नहीं सकता हूं, बट जो भी रिसेंटली हुई थी, जो बीएसएफ ने पाकिस्तानी साइड के साथ फ्लैग मीटिंग्स में इसको इनका इशू टेकअप किया है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी हमने ये मुद्दा उनके सामने रखा हुआ है. इंसिडेंट आज का भी है. देखिए, हमने ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं हम रेगुलरली इनको ऐसे सीज फायर वायलेशंस जो होती हैं और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं होती हैं कभी ड्रोन से या फायरिंग से, ये हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इसका उल्लंघन है और हम इनको पाकिस्तान के साथ हम इसको हमेशा उठाते हैं और इसको हम टेकअप करते हैं. और ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुई हैं, आज वाले का बात कह नहीं सकता हूं, बट जो भी रिसेंटली हुई थी, जो बीएसएफ ने पाकिस्तानी साइड के साथ फ्लैग मीटिंग्स में इसको इनका इशू टेकअप किया है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी हमने ये मुद्दा उनके सामने रखा हुआ है. विनीत, आपका प्रश्न था कतर के बारे में. देखिए, इसके बारे में हम जैसे आपको बताए जा रहे हैं, एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है कतर में, जिन्होंने 26 अक्टूबर को जजमेंट दिया था. ये 8 इंडियन एम्प्लॉयज जो थे अलदारा कंपनी के. जजमेंट कॉन्फिडेंशियल है और सिर्फ लीगल टीम के साथ शेयर किया गया है. वो अब अगला लीगल स्टेप्स जो हैं उसके बारे में उस पर जांच कर रहे हैं. एक अपील फाइल की गई है विशेष रूप से भी, और क्या लीगल स्टेप्स था, और उनका लीगल मुझे जितना दूर मालूम है उनका अपील फाइल हो गया है और हम भी कतरी अथॉरिटीज के साथ इस मामले में संपर्क बनाए हुए हैं. 7 नवंबर को हमारी एम्बेसी को एक और राउंड ऑफ कॉन्सुलर एक्सेस मिली, जो हम मिले 8 लोगों से, और हम उनके फैमिली मेंबर्स के साथ भी कांटेक्ट में हैं. पिछले हफ्ते या इसी महीने के पहले थोड़ा विदेश मंत्री जी ने उनके फैमिली मेंबर से यहीं दिल्ली में मुलाकात की थी और हम जितना हो सके लीगल और काउंसिल असिस्टेंस हम उनको देते रहेंगे. मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मामला बहुत ही संवेदनशील नेचर का है, ताकि स्पेकुलेशन में बिल्कुल शामिल न हो. मैं ये फिर दोहराने का अनुरोध करूंगा. कानूनी और काउंसिलर मदद जो भी हम सहायता दे सकते हैं हम देंगे. I know this question was interested, so if I could give the English version of it, I know there was a lot of query. As we had informed earlier, the Court of First Instance of Qatar passed a judgment on October 26 in the case involving 8 Indian employees of Aldara Company. The judgment is confidential and has only been shared with the legal team. They are now pursuing further legal steps, and I think an appeal has already been filed. We will also remain engaged with the Qatari authorities in this matter. On November 7, our embassy in Doha received another consular access to the detainees. We are in touch with their family members too. And as you recall, External Affairs Minister met the family members earlier this month in New Delhi. We will continue to extend all legal and consular support, and I would urge everyone not to engage in speculation considering the sensitive nature of the case. If I could, एक आप विशाल, आपका भी प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था. Okay, next question. Somebody else had a hand up. I didn't pick up. Yeah, sorry. Yeah, go ahead. If I Hasani, if you could introduce your record. Oh, sorry. This is Suhasini Heather from The Hindu. I had one question and a follow-up. The question is about the plans for a Voice of Global Summit as well as the G20 virtual summit later this month. I wanted to just get a sense of how many countries you're expecting will attend at the leadership level for both, and particularly in the G20. Are we expecting the leaders who weren't able to make it for the G20 summit to come for the virtual one, specifically, of course, the presidents of Russia and China? So that's my question. And the follow-up was about Israel as well.
You said you didn't want to prejudge what we might discuss with the US Secretary of State, but just wanted to get a specific comment on whether India is calling for a ceasefire from the Israeli side of its bombardment of Gaza. You mean in the context of what? In the context of tomorrow's conversation or a No, general? no. So it's not a follow-up, a general question. Because we okay. had seen your statement on the UNGA. No, I agree. So it's not nothing to do with the 2+2 tomorrow. Okay, Oh, fair no. enough. Fair enough. Who had a hand up? Yeah. No. Yeah, please go ahead. Sorry, aapka bhi? Sputnik India. My question is about Prime Minister Modi has been, speaking to West Asian leaders, including the Iranian president, who has urged India to extend, implement a humanitarian pause. And so, what's India's stance on that? Okay. On humanitarian pause. Okay. I saw a hand here. Yes, please go ahead. एक मिनट उनके पहले माइक उनके पास. Rishabh from Times Now. So there are reports about a court judgment in Australia for our former High Commissioner Navdeep Suri about him underpaying the house help or a staff, and he has been asked to pay about $136,000 as remuneration to the lady. Can you explain what exactly happened and what how does India see it? माइक्रोफोन उसके बिना सुनाई नहीं देगा आपको. सर, I'm रविंदर सिंह रॉबिन. आज करतारपुर कॉरिडोर के 4 साल पूरे हो गए हैं सर, और 5,000 की बनस्पत 200 के करीब एवरेज